सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो देखिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब ऑब्टेन होता है, जब कंपाउंड है वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में, सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में। उसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। उसके बाद जो हमारी एब्जॉर्ब एनर्जी है वो डिपेंड करती है हमारे कंपाउंड के नेचर पे, और जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो उसके बाद कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है उसे कन्वर्ट? डिवाइस दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। तो डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है हमारी जो रेडिएशन एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो मैग्नीफाइड होता है और पास ऑन हो जाता है किसके पास? रिकॉर्डिंग डिवाइस के पास में। उसके बाद वहां से हमें क्या मिलता है? एक प्लॉट मिलता है चार्ट के ऊपर, और इसी तरह का यहाँ पे हमने एक प्लॉट को शो किया हुआ है। यहाँ पे जो हमें ये फ्लक्चुएशंस या फिर बोल सकते हैं जो पीक्स हमें दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये क्या है? हमारी नॉइस है। और जो मेन जो हमारा सिग्नल है वो कौन सा है? ये है मेन जो है हमारा सिग्नल, ये है। और ये क्या मिल रही है हमें? जो फ्लक्चुएशंस और जो पीक्स हमें दिखाई दे रही है इस तरह की स्मॉल पीक्स, वो क्या है? हमारी नॉइस है। सो फॉर ऑब्टेनिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फॉर ऑब्टेनिंग absorption spectra, the compound interacts with the electromagnetic radiation, with the suitable electromagnetic radiation, magnetic radiation. The energy is absorbed. कौन करता है absorb? The energy is absorbed by the molecules, of the compound, depending upon the nature of the compound, the absorbed energy is magnified, and passed on to the recording device किसके पास आ जाती है? वो रिकॉर्डिंग डिवाइस के पास में, टू प्रोड्यूस अ प्लॉट ऑन द चार्ट, and one such plot is shown in figure. प्लॉट को शो किया है फिगर के अंदर. It is clear from the figure that there are number of random peaks or fluctuations present in the background of spectrum, तो देखिए हमें फिगर से क्लियर है कि यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है, हमें नंबर ऑफ रैंडम पीक्स हैं और क्या है हमारी फ्लक्चुएशंस हैं. ठीक है, प्रेजेंट है जो इन द बैकग्राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम में. और ये फ्लक्चुएशंस किस वजह से हो सकती है? हमारी हो सकती है या तो क्या हो, सैंपल के साथ हमारा कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट हो, या फिर जो हमारे डिटेक्टर उसने फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस कर दिए हो. ठीक है, सो दीज fluctuations may be due to some components, present along with the sample, or may be due to
false electronic signal to false electronic signal produced by the detector, produced by the detector. कैसे हो सकती हैं? These fluctuations may be due to some components present along with the sample or may be due to false electronic signal produced by the detector, and these fluctuations, students, called noise. So these fluctuations are called noise. क्लियर है बच्चों? इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं. अगर स्टूडेंट्स हमें जो हमारे रियल स्पेक्ट्रल पीक है उसको अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है नॉइस से, तो जो हमारी रियल पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए हमारी नॉइस के कंपैरिजन में. ओके, सो टू डिस्टिंग्विश the real spectral peak from the noise, the intensity of real peak should be कितना? 3 to 4 times, should be 3 to 4 times more than the noise fluctuation. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है जो हमारी रियल पीक है, जो हमारी रियल स्पेक्ट्रल पीक है, उसको जो नॉइस है, जो फ्लक्चुएशन है, नॉइस फ्लक्चुएशन, उससे तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब जो हमारी रियल पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? 3 से 4 टाइम्स ज्यादा होगी नॉइस से, नॉइस फ्लक्चुएशन से. ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो. सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होती है? SNR. So S by N, signal to noise ratio, that is equal to average signal amplitude by me average noise amplitude. Average signal amplitude by average noise amplitude. All right students, amplitude समझ आया? तो S by N रेशियो क्या होगी? सिग्नल टू नॉइस रेशियो. एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय में क्या कर देंगे? एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड. तो वही क्या हो जाएगी हमारी S by N रेशियो. जितनी ज्यादा S by N रेशियो होगी उतनी ही क्या होगा? जो हमारा नॉइस है उसमें रिडक्शन होगा, और जितना नॉइस में रिडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेट क्या हो जाएगी? मेजरमेंट हो जाएगी. क्लियर है? सो क्या लिखेंगे हम? मोर इज द वैल्यू of S by N ratio, more is the noise reduction, and hence accurate the measurement, ठीक है. तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हमारी? SNR, S by N रेशियो, एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय एवरेज नॉइस एम्पलीट्यूड. और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी S by N रेशियो की उतना ही ज्यादा क्या होगी? हमारी नॉइस रिडक्शन होगा, और उतना ही ज्यादा एक्यूरेट क्या होगी? हमारी मेजरमेंट होगी. सो हमने देखा कि S by N रेशियो को बढ़ाने से क्या होगा? जो हमारी नॉइस रिडक्शन है वो भी बढ़ेगी, और इससे जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आएगी. तो क्या हम S by N रेशियो को बढ़ा सकते हैं, और कैसे, हम कौन सी वेज है जिससे S by N रेशियो को बढ़ा सकते हैं? तो उसी को हम स्टडी करते हैं. सो दी S by N रेशियो कैन बी increased by the following ways, जिसमें फर्स्ट हम लेंगे
हार्डवेयर डिवाइसेस, तो यहाँ पे दी हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हम शील्ड्स हैं, फिल्टर्स हैं, तो ये क्या इन्हांस करते हैं एसएनआर को। दी हार्डवेयर डिवाइसेस such as shields and filters can enhance the SNR, etc. can enhance the SNR. Second, the software technique, like Fourier transformation, तो देखिए नेक्स्ट आती है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेक्निक है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, इसमें हम स्पेक्ट्रा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मेथड में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो द सॉफ्टवेयर टेक्निक लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड this technique involves the mathematical operation, जिसको हम ब्रीफली स्टडी करते हैं अभी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा होता है, द स्पेक्ट्रा आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन द अनदर मेथड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो द स्पेक्ट्रा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन as a function of frequency, that is okay, function of frequency. And there is another method of expressing the spectra in the form of intensity of radiation, यहाँ पे क्या हो जाएगा, as a function of time, that is function of time. So एक मेथड में हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज अ फंक्शन ऑफ frequency. So the spectra are represented in the form of plot of intensity of radiation as a function of frequency f nu, and here there is another method of expressing the spectra in the form of intensity of radiation as a function of time, that is f t. Alright, so यहाँ पे हमारे पास कितनी हो गई, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक हमारा टाइम डोमेन। So thus there are two methods of recording the spectra. The spectra, one is the frequency domain, that is f nu, and the other is the time domain. So there are two methods of recording the spectra, one in the frequency domain and another in the time domain, that is ft. ऑलराइट, सो हमारे पास टू मेथड्स होगी रिकॉर्ड करने के स्पेक्ट्रा को, एक हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दूसरा हमारा टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन contains every
information present in the frequency domain and vice versa। ठीक है बच्चों, जो हमारी टाइम डोमेन है वो कंटेन करता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो प्रेजेंट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन कंटेन करता है एवरी इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है हमारी टाइम डोमेन के अंदर। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर में, टाइम डोमेन के अंदर में, यूजिंग जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दी frequency domain can be transformed into time domain by a mathematical operation called Fourier transformation, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो हमारा टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम को कैसे राइट कर सकते हैं, द टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम रिटन एज, पे क्या होगा, एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स, और यहाँ पे एफ न्यू, और यहाँ पे e की पावर 2 पाई आई न्यू टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डी न्यू। ऑल राइट, और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन can be converted into frequency domain, converted into frequency domain by relationship तो क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे जहां पे t है इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f न्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस में 2 पाई आई न्यू t, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन can be converted, time domain can converted into frequency domain by using Fourier transformation, time domain can be converted into transformed into frequency domain by relationship f nu, that is equal to minus infinity से plus infinity हमारी लिमिट्स है f t e की पावर माइनस 2 पाई आई न्यू टी एंड dt। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हमें ग्राफ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और अगर हम देखते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ग्राफ, तो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिग्नल with a computer is carried out in few seconds, and second, the great advantage of Fourier transformation is its speed, okay, and the spectra are taken in the interferogram, and recorded in the
recorded in the computer within 1 second. All right. तो सबसे ज्यादा जो ग्रेट एडवांटेज है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या है, इसकी स्पीड, जो कि स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सिग्नल का कंप्यूटर के साथ में हम फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। और जो ग्रेट एडवांटेज है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी स्पीड है। जो स्पेक्ट्रा है हम लेते हैं इंटरफेरोग्राम में, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं कंप्यूटर में विद इन 1